Now we are going to start with the blood vascular system of cockroach. It is an open type of vascular system. You can see in the diagram. First discuss the diagram. The anterior aorta is present in the middle line of the body, and it is attached with alary muscles. These are the alary muscles, and in this alary muscle you can see that all the muscles are going to combine together into a single point. Anterior aorta is present here, and chambers different, a lot of number of hearts are there, and total 13 number of hearts are there, and all these chambers are connected. One heart is connected with another heart, right, to the opening which is called the ostia. So as a result of this, because it is an open type of circulatory system, so blood is spread all over the organs, and it is not going to be circulated by a tube-like or vessel-like structures. So there is a lacking of vessel-like structures. Only a few is found, and in its circulatory fluid, what is going to circulate the blood is hemolymph. A little amount of hemoglobin is there, and actually it is a yellowish transparent fluid, right? So let us have a discussion about this. Blood vascular system of cockroach is an open type. Blood vessels are poorly developed and open into space, that is the hemolymph. Hemocell again, hemocell matlab body cavity in which the lymph is flowing along with hemoglobin. That is why it is called a hemocell. Visceral organs located in the hemocell are bathed in blood. जितने भी इंटरनल ऑर्गन है वो पूरे के पूरी ब्लड से डिप्ड रहते हैं. And hemolymph is composed of colorless plasma and hemocytes. इसके अंदर colorless plasma होता है और थोड़े बहुत hemocytes present होते हैं. Heart of cockroach consists of elongated muscular tube laying along mid-dorsal line of thorax and abdomen. So it is not a single heart, but a number of heart is there, in which you can see that heart of cockroach consists of elongated muscular tube like laying along the dorsal line of thorax and abdomen. It is differentiated into funnel shaped chambers with ostia. इसके funnel shaped chamber होते हैं, which is also called the ostia on either side. दोनों साइड में अगर ये एक सिंगल हार्ट है तो यहाँ पे भी एक ostia होगा, and it is also having another ostia here, and that is how the next heart is going to be connected, right? So in this way this is another ostia. So both of these sides, each and every heart is having ostia. Blood from sinuses enter heart through ostia and is pumped anteriorly to sinuses again. साइनसस मतलब एक सिंगल हार्ट को एक एक साइनस कहा जा रहा है यहाँ पे. ब्लड फ्रॉम साइनसेस, तो साइनस से ब्लड निकल के एंटर द हार्ट थ्रू ऑस्टिया एंड इज़ पम्प्ड एंटीरियरली टू साइनसेस अगेन, और फिर से वो साइनस में एंटर कर जाता है.
So that was all about the circulatory system. Now come to the respiratory system. In the cockroach body, the respiratory system is very much simpler one, is having a number of trachea, tracheoles, and which is going to open through the spiracles on the upper surface of the body, and through which they are going to do the exchange of gases. So the respiratory system consists of a network of ट्रैकिया. इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया होता है, नथिंग एल्स इज़ देयर. तो ना ही कोई नोज़ है, ना कोई लंग्स है, नथिंग. This is the network of trachea only that open through 10 pairs of small holes. हाँ, ये बॉडी के सरफेस में ये जो ट्रैकिया है वो 10 पेयर ऑफ ओपनिंग से खुलता है, एंड दैट ओपनिंग्स आर कॉल्ड द स्पाइरकल्स प्रेजेंट ऑन द लैटरल साइड ऑफ द बॉडी. ये स्पाइरकल्स कहाँ पे ओपन करता है, ऑन द लैटरल साइड ऑफ बॉडी. 10 branching tubes, that is tracheal tubes, subdivided into tracheoles. ये जो ट्रैकिया है थिन ब्रांचिंग ट्यूब से, which is tracheal tube subdivided into tracheoles. सबसे पहले वो ट्रैकियोल में डिवाइड होता है and carry oxygen from the air to all parts of the body. एयर से ऑक्सीजन को इनटेक करता है और बाद में पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है. एंड ओपनिंग ऑफ द स्पाइरकल्स इज़ रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर्स. और ये जो स्पाइरकल का ओपनिंग है उसके चारों तरफ स्फिंक्टर मसल प्रेजेंट होते हैं. बाय द साइड ऑफ द spiracle, it is having the sphincter muscle which regulate the opening and closing of the spiracles. Exchange of gases takes place at the tracheoles by diffusion. And ये जो intake and throwing out of gases होता है वो भी very simple way से by the process of diffusion completed. Now come to the excretion. In this excretion is performed by Malpighian tubules. अभी हम लोगों ने पढ़ा excretory system के नाम पे क्या होता है. It is done by only the Malpighian tubules. Each tubule, ये जो एक एक tubule है कितने होते हैं Malpighian tubule? 100 to 150. And each tubule is lined by glandular and ciliated cell. हर एक ट्यूब्यूल या में बहुत सारा ग्लैंडुलर सेल एंड सेलिएटेड सेल प्रेजेंट होता है. दे एब्सॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस्ड एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड. इसके बॉडी में, कॉकरोच के बॉडी में जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होता है उससे क्या होता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट का प्रोडक्शन होता है. ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट का प्रोडक्शन होता है ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है ये Malpighian ट्यूब्यूल और उसे कन्वर्ट करता है इस इनटू यूरिक एसिड. आफ्टर एब्जॉर्प्शन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड एंड उसके बाद उसे वो एक्सक्रीट आउट करता है, विच इज़ एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द हाइंड गट. राइट, इसके बाद वो इसे एक्सक्रीट आउट करता है अपने बॉडी से. So because its excretory product is, final excretory product is uric acid, that is why the cockroach is also known as the uricotelic animal. In addition, the fat body, nephrocytes and uricose glands also help in excretion. इसमें आप मेंशन कर सकते हो इसके एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन में आता है फैट बॉडी एंड नेफ्रोसाइट्स. Fat body and nephrocyte are also and uricose glands also help in excretion, right? In the next video we will do the nervous system.